Good morning, dear student. And I think after a long time, I'm taking a class, all of you. And with your request, I will start with topic from spectroscopy. So let's start spectroscopy. So with the request of few of you that you are requesting for the NMR, and you know that this topic belongs to the spectroscopy. So before going to the detail of NMR, first I would like to introduce you about the spectroscopy, what spectroscopy deals, spectroscopy how help us, and what is the technique this is. And actually the spectroscopy is the technique of identification of identification of organic compound. आमर ऑर्गेनिक कंपाउंड मन को आइडेंटिफिकेशन करबा पाई वी यूज द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक. नाउ व्हाट इज द मेन टूल ऑफ this technique and how this technique deals? Actually you can say, let's suppose we earlier there was a technique of identification of organic compound was the analytical method. In that method what people were doing, they were testing the compound, they were having a elemental detection जमती कि कंपाउंड रे केन केन एलिमेंट अच्छन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर. तो फास्ट एलिमेंटल डिटेक्शन करा होतला. एलिमेंटल डिटेक्शन सरला परे तार मॉलिक्यूलर वेट निया होतला, इंपेरिकल फार्मूला निया होतला. मॉलिक्यूलर वेट इंपेरिकल फार्मूला नेला पर इंपेरिकल फार्मूला मास नेला परे तापरे सेनु मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल फार्मूला ई सब के यूज करिकी सेनु कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला कढ़ा होतला. बट से कंपाउंड बहुत लेंथी थिला कारण प्रत्येक एलिमेंट डिटेक्शन रे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप रहउतला. आ मेन डिमेरिट थिला से कंपाउंड रे कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाउतला बिकॉज सेने कंपाउंड के डायरेक्टली डील करा होतला. इन दैट टेक्निक द पीपल्स वर डायरेक्टली डीलिंग विद द कंपाउंड. तो दैट मेथड वाज not accurate also. So after a long journey the spectroscopy technique came, and when it came it's a revolution in the field of chemistry, you can say, or in the field of organic compound, or in the field of organic chemistry. So what people did in this technique, ये टेक्निक रे कौन करागला जे डोंट हियर इन दिस टेक्निक द कंपाउंड was not directly investigated. ये जगह कंपाउंड को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कराला. इन्हें काना करागला हियर ए टूल दैट इज मेन टूल जेनटा मैं कहूँ द मेन टूल ऑफ दिस कंपाउंड और ऑफ दिस टेक्निक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये टूलटा को इन्हें यूज करागला. काना करागला ये जगह कंपाउंड के डायरेक्टली डील नहीं कराही. So here what we did or what the people did, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को से माने कंपाउंड संगे इंटरेक्ट कराले. तो इटा हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंपाउंड संगे इंटरेक्ट करागला. आ सेनु जेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट कला पर जहाँ बाहरला से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही स्टडी करागला. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मेथड संगे इंटरेक्ट करागला और से मैटर बा कंपाउंड संगे इंटरेक्ट करागला और से ही इंटरेक्शन के ही स्टडी करागला. तो इन्हें डायरेक्टली कंपाउंड संगे डील नहीं आसला, कंपाउंड बा इन्हें मैटर संगे डायरेक्टली डील नहीं आसला. सो इन्हें काना हला आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही स्टडी कला. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. माने जमती कि मुई सपोज जन विषय जानबार लगी चाहूँ, आई वांट टू नो सम अबाउट समबडी, आई विल नॉट डायरेक्टली आस्क टू दैट पर्सन दैट हाउ यू आर or what is your behavior, whether you are anger or you are cool or you are calm or you are quiet, or I think say how genius you are. It is not like that I will directly ask you. I will send someone, मु आउ जन को पठाबी और पचारबी से व्यक्तिटा केमती. So in that way I will send a third person to know about that person, and I will take the feedback from the third person, not to the direct person. बिकज से डायरेक्ट पर्सन विषय तानु फीडबैक ने मे भी मो रिलेसन खराब हो पारे. सो दैट्स वाई टू आस्क डायरेक्टली इज नॉट गुड. आम आउ जन को पठेला आ से व्यक्ति आसिक आमको फीडबैक देला. तो सेमती यही जगार मैटर मु जार विषय जानबार लगी चाहूचे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है थर्ड पर्सन. तो सी गला
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेथड संगे इंटरैक्ट कला आउ आमे सही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी कला. This is the basic concept of spectroscopy. So now we are studying the interaction of electromagnetic radiation with the matter, and actually this is spectroscopy. So in spectroscopy what happened, the electromagnetic or the interaction of electromagnetic radiation with matter is spectroscopy. This is the very simple meaning of spectroscopy. So we are interpreting or we are analyzing the electromagnetic radiation. So what the in a interaction कार भितर हो जे electromagnetic radiation आउ matter भितर. So now we will study what types of interaction possible. So let's discuss टाइप ऑफ इंटरेक्शन केन केन प्रकार इंटरेक्शन हो पारबा. जमती कि जदि धरिनियो आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंड कला रेडिएशन रो किछि एनर्जी एब्जॉर्ब करी गला मैटर विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट इज वन ऑफ द इंटरेक्शन दैट इज एब्जॉर्प्शन विल हैपन माने मॉलिक्यूल बा मैटर एनर्जी एब्जॉर्ब करी नेला. व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक टू द मैटर एंड गेट बैक पचको फेरी आसला माने स्ट्राइक हला पचके फेरी आसला. दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन भी ही पारे. देन इमिशन भी ही पारे किछि एनर्जी बाहरला सेनु. ट्रांसमिशन भी ही पारे स्कैटरिंग भी ही पारे. So these are many type of interaction: absorption, reflection, emission, transmission and scattering. Out of all these three interaction or out of all these type of interaction, not all are required, but for your level mostly or on the basis of interaction most popularly three type of interaction are studied. Other are also studied but more popularly or you can say more generally बा आम अप टू पीजी लेवल भी आम कही पार्मा. स्कैटरिंग भी पढ़ा जाई पारबा बट अप टू पीजी लेवल वी डिस्कस अबाउट थ्री टाइप ऑफ इंटरेक्शन. दैट इज थ्री टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक्चुअली थ्री टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. वन इज absorption spectroscopy. Another one is emission spectroscopy, and another one is scattering spectroscopy. These are more frequently studied: scattering based, absorption based, emission based, scattering spectroscopy means scattering based. So firstly we will discuss about absorption spectroscopy. I hope up to now you are clear. So first we will discuss. So there are three. One is absorption, emission, and another one is your scattering. Absorption, emission and scattering. So first we will discuss about the absorption based. Let's discuss about absorption based. So absorption based study कला बेले absorption based रे most requirement काना अच्छे. What is the most important thing one required? Absorption based spectroscopy discussion कला बेले the molecule must have non-degenerate multi-energy state. ये है requirement. This is the requirement to study absorption spectroscopy. Non-degenerate multi-energy state माने काना गोटे रु अधिका एनर्जी लेवल थिबा कथा और समस्तंकर एनर्जी अलगा अलगा हेतिबा कथा. This is the important requirement. Non-degenerate multi-energy state.
व्हाट आर दोज अवेलेबल इन अ मॉलिक्यूल गुटे तो बोले इजिली जानिछ गुटे हला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल भितर थिसी जेनटा कि आमे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे पढ़िथिबो काना काना E1 E2 E3 E4 एंती अछि similarly what are others vibrational energy levels are also there vibrational energy levels are also there what are those V1 V2 V3 V4 like that rotational energy levels are also there rotational energy levels are also there माने J दिहासी J1 J2 J3 like this and spin energy level is also there spin energy level is also there now let's go to how the absorption takes place first the thing hela there should be non degenerate energy levels now we will discuss how there must be or how or when absorption takes place now let's go to the electronic energy level so in the electronic energy level you have first energy level second energy level third energy level fourth energy level like this first energy level gender which the ground state it is called ground state next above is the fast excited state I hope in the hydrogen spectrum you are clear about this now when absorption will take place if you will give a radiation or energy that is equal to the energy gap so whatever the energy we have supplied suppose its energy is h nu h is Planck constant nu is frequency if this energy is equal to this energy gap delta E then only a transition will take place or a absorption will take place so the requirement of absorption the condition is when absorption will take place or when energy will be absorbed only in a case when h nu is equal to delta E suppose whatever the energy we supplied that gap is equal to this one E1 E3 minus E1 then the transition will take place to E1 to E3 if the energy we supplied that is equal to E1 and E4 E1 और E4 भितर gap अच्छे तार संगे से energy match कला then transition will take place from E1 to E4 now you can ask if we supplying energy is not equal to any gap then very clear there will be no transition so for a absorption or for a transition h nu must be equal to delta E and this concept is applies to in all these cases so when there will be absorption if we are supplying energy whatever the energy we are supplying if that is equal to the difference in the energy level only in that case there will be a absorption otherwise not this is the important requirement so energy gap should be equal to the amount of energy we are supplying or we are giving the electromagnetic radiation means जदि आम कहवा ट्रांजिशन हबार लगी हेले सपोज आम फास्ट एक्सेस स्टेट के करमा E1 E2 रो एनर्जी गैप संगे समान हवा कथा V1 V2 रो गैप संगे समान हवा कथा J1 J2 रो गैप संगे आई एम टॉकिंग अबाउट द गैप delta V here you can say delta E here delta J here similarly spin रे भी S1 to S2 ए गैप संगे जार एनर्जी मैच करबा से सही रेडिएशन के एब्जॉर्ब करबा एंड ए जगह रे वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल गैप दिस इज रोटेशनल एनर्जी लेवल गैप दिस इज स्पिन एनर्जी लेवल गैप नाउ वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट electromagnetic radiation because we are discussing about we are main tool is what here the main tool is electromagnetic radiation so we will have a focus on electromagnetic radiation तुम पढ़ी electromagnetic spectrum पढ़ी electromagnetic spectrum plus 2 रे भी थिला फर्स्ट तुम थिला cosmic ray then you had gamma ray then you have x-ray then UV then visible then IR then microwave
then radio wave. What is the significance of this spectrum? This significance is, this is the energy decreases from left to right. Wavelength increases from left to right. माने cosmic ray रो energy highest, radio wave रो energy lowest. Cosmic ray रो wavelength lowest, radio wave रो wavelength highest. Energy कमी कमी जाउछे. आ एटा जणा भी पड़सी केंदी. If you will talk about the gamma ray can penetrate up to the nucleus. Gamma ray can penetrate to the nucleus. माने एटम रहिला एटम रो बाहर सेल रहिला, भीतर सेल रहिला, मझिरे जेकी न्यूक्लियस अछि. So gamma ray जदि हमें देमा, it can interact with the nucleus. It directly nucleus पर्यंत पहुंची पारमा. So it is very highly energetic, gamma ray. If you will talk about the X-ray, they can interact with, तानु टिके कम एनर्जी, interact with the inner electron. भितरे जन इलेक्ट्रॉन रहिला तार संगे X-ray interact करि पारबा. Interact with inner core electron. They come energy. If we'll talk about the UV and visible, they can interact with the valence shell electron. माने बाहर इलेक्ट्रॉन संगे से interact करि पारबा. So that's why that UV visible is responsible to make a electronic transition. Electronic transition हेबार लगी हेले हमको सेथि लगी because outer electron रो ही transition हबा. आ outer electron संगे केन radiation interact करू छे, UV visible. तो सेथि लगी in UV visible spectroscopy तमर अच्छे सिलेबस रे. UV visible spectroscopy, it deals with the electronic transition. Is it clear now? How concept is clear? UV visible spectroscopy रे electronic transition हवा because the UV visible radiation can interact with the valence shell electron. Now what about IR? IR deals with molecular vibration or interact with molecular vibration, and microwave deals with molecular rotation. So IR deals with molecular vibration और vibrational energy level संगे deal करबा. Microwave deals with molecular rotation. That's why जेतेबेले आमे vibrational transition state करूछु, V1 और V2 भितर transition होची, that comes under IR spectroscopy. So IR spectroscopy deals with the vibrational energy level transition of the molecule. सेने molecule bond भितर vibration देखा होतला. Similarly rotational energy level रे study करा जिबार लगी हेले बा rotational energy levels रो transition हबार लगी हेले, in that case you need microwave radiation. Rotational vibration spectroscopy रे ता combinedly पढ़ा आसी, rotational vibrational spectroscopy के combinedly पढ़ा आसी, और जेने की IR और microwave रो requirement हेबा. Now what about the radio wave? Radio wave can make a flip of nuclear spin, or radio wave can flip the nucleus spin. It can flip the nucleus spin. Flip the nucleus spin माने काना? Nucleus जे की गुटे positively charged particle and it's also revolving about its own axis. से निजर axis चारी तरह बुलुचे with positively charged. That's why
it will take or it will act as a tiny magnet. ये magnet आकार behave करवा, and as it will behave as a magnet, when we will put a external magnetic field around this nucleus, it will have two opposite spin, or it will have two spin, and this energy gap is very less, and this gap is matched, or this energy gap is matched with radio wave or radio wave सांगरे ए न्यूक्लियर स्पिन रो एनर्जी लेवल टा मैच गैप टा मैच करबा. दैट्स व्हाई radio wave is used, or radio wave is required for the study of NMR. Radio wave is required for the study of NMR. So that's how our NMR topic is going to start. So NMR, in NMR you will mostly deal with flip of nuclear spin, or flip of the nucleus, flip of the nucleus by using flip of the nucleus by using radio frequency. Flip of the nucleus by using radio frequency. So जानी पारला समझते जे UV visible spectroscopy रे आमर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हेबा. UV visible spectroscopy इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, माइक्रोवेव रे रेडियो रोटेशनल ट्रांजिशन, एंड फॉर द न्यूक्लियर स्पिन फ्लिप रे तमर NMR बा रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज हवा. और से NMR विषय रे आम नेक्स्ट वीडियो रे डिटेल डिस्कशन करमा. थैंक यू.